Hello students, here we are with our next topic in the chapter first. Here are the two branches of economics, the positive and normative economics. So, what are these? In positive economics, we deal with the past, present and future issues of the economics which are related with what is, what was or what would be. Means the positive economics deals with the economic issues related with the past, present and future. मतलब कि कोई सर्टेन एक्टिविटी हैपन होती है या परफॉर्म की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा फ्यूचर में। अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है करेंटली और एट प्रेजेंट तो क्या रिजल्ट हैं उसके हमारे पास। एंड इफ द सेम एक्टिविटीज वर बीइंग परफॉर्म्ड इन द पास्ट व्हाट वर द रिजल्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डील करती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके चलती है एंड दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी वेरीफाइड टू फाइंड आउट द true results. Means whether the results are true or not, that can be verified with the help of the facts and figures which are used in positive economics. Now we will see the examples of positive economics. We have divided all the examples in all the three tenses: past, present and future. See, in past, on the eve of independence, poverty in India affected larger population than now. Okay, ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट के मुकाबले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी जो थी इंडिया में या कंट्री में ज़्यादा थी. So if we talk about the present, here we are, 22% of the population in India is absolutely poor. Here we have the figure 22% of the population is below poverty line. Coming to the next part, which is future, if population continues to grow, poverty may rise more than 22%. Means अगर population ग्रो करती है या राइज होती है तो हमारी जो पॉवर्टी है वो 22% से ज़्यादा हो जाएगी. सो all the facts and figures we have used in our example reveals the past situations, present situations and future situations. All these are related with what is, means the poverty is 22% or 22% of the population is below poverty line. What was in the past, more than 22% of the population remained below poverty line, and what would be in future, if population continues to grow the situation may worsen. Means more than 22% of the population will be below poverty line if population continues to grow. So पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो एग्जिस्ट करते हैं और उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम वेरीफाई या टेस्ट कर सकते हैं वेदर द रिजल्ट्स आर ट्रू और नॉट. Moving towards the second or the next branch, that is normative economics, it deals with the opinions. Means it does not deal with the issues which existed in past or which are existing in present or which may exist if a certain condition happen. It deals only with the opinions. It does not deal with the issues which were present or which are present or which would present in future. Okay, so it deals with what ought to be. Means क्या होना चाहिए. Normative economics, unlike positive economics, not includes or does not include facts and figures. Normative economics में कोई facts and figures हम use नहीं करते हैं because it is just opinions of the economists, and these opinions, or we can say any of the opinions, cannot be verified to find out the results, or we can say we cannot find out whether the results in normative economics are true or not. And very important part, normative economics may lead to controversies because opinions always lead to controversies. The economists can have different opinions regarding a particular condition or a situation. So normative economics may lead to controversies. Now the examples of normative economics are
MG Narega, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, will one day bring to an end the problems of unemployment in India. This is the opinion. It is not sure that we can overcome the problem of unemployment with the help of MG Narega only. This is the opinion. One can say that if MG Narega can work, or if MG Narega continues, the problems of unemployment can be overcome. The second one is MG Narega uses taxpayers' money and should therefore be stopped. Other economists or another economist may be of the opinion that MG Narega uses, or as MG Narega uses taxpayers' money, it should be stopped, and that money can be used in some productive activities or other productive activities. These are all the opinions, or these are mere the opinions of economists. They do not have any result, or cannot have any result, whether they will be successful in this or not. We cannot say for sure. The next topic or next point is what is an economy. हम economics पढ़े हैं as a subject matter. Now what is an economy? इकोनॉमी एक सिस्टम या एक स्ट्रक्चर होता है जो उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके एक ह्यूमन बीइंग मनी अर्न करता है. ओके, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम और अ स्ट्रक्चर और अ मैकेनिज्म बाय विच people of an area earn their livings. That is called an economy. Now the economy have two aspects: the nature and the level of economy. What is the nature of economy? The nature of economy depends upon the type of activities performed. कि किस तरह की activities लोग perform कर रहे हैं, उनके ऊपर depend करता है कि हमारी economy किस nature की होगी. And the activities widely classified into two types: manufacturing activity and service providing activity. That manufacturing can be either in agriculture sector or in industry, whatever it is, but we will use only the category that is manufacturing, and the second one is service. If more manufacturing activities are performed, either that are in agriculture or in industry, the economy will be called manufacturing oriented economy, or the nature of the economy will be manufacturing. And if more activities or more persons are engaged in service providing activities, the economy will be service oriented. Okay, that will be the nature of economy. Next, the level of economy. The levels of economy are divided into three parts, or categorized into three parts, that is developed economies, developing economies, and underdeveloped economies. Now, how can we classify the economy or any economy into developed, developing, and underdeveloped economies? The classification depends upon the income level of the people. How much the people of the economy earns on an average basis helps to classify the economy either in developed, developing, or underdeveloped economy. Now there are certain types of economies or the structures which are followed in different countries. These economies depends upon or determined by the degree of control over economic activities by the government. इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं उनको कंट्रोल या गवर्न कौन कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी किस तरह की होगी. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक इकोनॉमी में परफॉर्म की जाती हैं लोगों के द्वारा. द फर्स्ट टाइप ऑफ economy is, or the structure of economy is, the market or the capitalist economy. The market or the capitalist economies are those economies in which all the economic activities are controlled by market forces. And there are two types of market forces, demand and supply are generally classified into. All the activities which are either manufacturing or service providing, which are performed by the general public, if these are governed or controlled by the market forces, that means according to demand and supply, कि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड हो रही है वही चीज़ मैन्युफैक्चर की जाएगी. से एग्रीकल्चरल आउटपुट की डिमांड ज़्यादा है, ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चरल आउटपुट को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा. इफ़ सेकेंडरी गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स आर डिमांडेड मोर,
द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विल बी फोकस्ड मोर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. So we have seen that these activities were focused on the basis of their demand, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. सेम एज द सप्लाई, जिस चीज़ का सप्लाई मार्केट में बढ़ाना होगा उसका आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, और जिसका सप्लाई कम करना चाहेगी गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन कंट्रोल कर लिया जाएगा. सेकेंड वन इज all these activities are performed for profit motive, means people generally perform these activities either manufacturing or service providing to earn profit. Producers mainly perform manufacturing and service providing to provide the goods or services to the general public, and their main motive is profit making. The markets are consumer centric, or consumer is considered as the king of the market, or all the marketing activities are consumer centric or centered around the consumer. Whatever they are demanding, the producers will produce those type of goods. In these type of economies, say in capitalist or market economies, private sector holds major resources, or private sector dominates the economic activities. And examples of these kinds of economies, which countries are following this economic structure? Mainly USA, UK, and most of the European countries are following this economic structure, say capitalist economic structure. Our next economic structure or type of economy is centrally planned economy or socialist economy. In this type of economy, economic activities are controlled by the government, means government decides which or what kind of activities are to be performed by the general people. Activities are performed with social welfare. यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी उनके पीछे जो मोटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर होगा, जनता के कल्याण के लिए वो परफॉर्म की जाएंगी. एंड मार्केट्स आर नॉट कंज्यूमर सेंट्रिक. इट मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड्स which kinds of goods or what goods are to be produced or what goods are to be controlled. गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है. गवर्नमेंट जिस गुड को प्रमोट या जिस आउटपुट को या जिस प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना चाहेगी उनके प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करेगी, और जिन गुड्स के सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है, रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है, उन गुड्स के ऊपर बैरियर्स लगा देगी. फॉर एग्जांपल से गवर्नमेंट अगर लिकर या टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहती है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लिवाई कर देगी. तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्ट्स द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है, कंज्यूमर की डिमांड को नहीं ध्यान में रखा जाता. गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू करती है किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है और किसका कम करना है. ऑल द रिसोर्सेज इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी are held by the public sector. Here public sector means the government, means government जो है या government की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मेजर रोल होता है इकोनॉमी में, या वो डोमिनेट करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. एंड द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज चाइना. चाइना में सारे ही जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी. Mixed economy follows all the characteristics or all the important characteristics of both the previous economies, that are market and centrally planned economy. Means mixed economy जो है दोनों के ही features को include करती है, centrally planned और socialist economy and market economy या फिर capitalist economy. दोनों के ही important features mixed economy में पाए जाते हैं. In this economy, all the activities are regulated by government, but according to the market forces. गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट या कंट्रोल तो करती है, बट मार्केट फोर्सेस को कंसीडर करके चलती है कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड किस प्रोडक्ट की कर रहे हैं, उसके उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा, एंड जिसकी डिमांड नहीं हो रही है उसका प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा. सी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस दिस इज द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो बोथ दोनों ही फीचर्स को इन्वॉल्व या इंक्लूड करके चल रही है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द एक्टिविटीज और द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर मोटिव. यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग होंगी चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग होंगी, दोनों में ही मोटिव प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर होता है. दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ध्यान में रखना होता है कि प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर भी होना चाहिए. दैट मीन्स दे कैन नॉट अर्न प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ पब्लिक और जनरल पब्लिक. वो लोगों की नीड्स को सेक्रीफाइस करके अपने प्रॉफिट
मोटिव को ध्यान में नहीं रखेंगे, वो उन लोगों की नीड्स को भी ध्यान में रखेंगे और अपना प्रॉफिट भी मेंटेन करके चलेंगे। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ पे मार्केट्स जो है कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। दैट मीन्स कंज्यूमर्स की डिमांड को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। से अलोंग विद द सोशल वेलफेयर, फॉर एग्जांपल द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी आर ऑब्जर्विंग इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया जिसमें वो जो बेसिक लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, मेनली फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उनको एसेंशियल फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो द डिमांड और द नीड वॉज ऑन द पार्ट ऑफ द जनरल पब्लिक कि उनको असेंशियल्स प्रोवाइड किए जाए। अलोंग विद द सोशल वेलफेयर, डिमांड थी लोगों की और साथ साथ में पब्लिक वेलफेयर भी, जनता का कल्याण भी हो रहा था। In this type of economy, both public and private sector mutually dominates the resources। दोनों के पास ही resources होते हैं, किसी का कोई ज़्यादा important role नहीं होता कि हम कहें कि public sector ही dominate करेगा या फिर private sector ही dominate करेगा। Both mutually dominates, but हम यहाँ पे कह सकते हैं कि mixed economy में private sector का जो dominance होता है वो ज़्यादा होता है। Government जो है limited areas या limited resources को ही control करती है। जो resources बहुत ज़्यादा scarce होते हैं, जो limited होते हैं, उनके ऊपर government या फिर जिनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनको गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होता है। एंड द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है।